Hi Gaurav, glad to meet you and let's do this podcast of yours. I think the first episode it is. So let's start. Throw me your questions. I would like to know how come you maintain this physique of a teenage boy? Yeah, that's very good. This has been a transformation in recent years only. I was almost 84, 85, 10 years back. Yeah, kgs, yes. And at the moment I am 68. And I maintain 68. Yes. So, I mean, I've been doing running for quite a long time. I've been doing physical exercise for quite a long time. But the major, I think the transformation or paradigm shift was in when I changed my entire life cycle, like entire lifestyle. Not just a 2-hour morning routine, but every moment that I'm spending throughout 24 hours. I gradually, in step over step, transformed all of that, and this is the result of that. So yeah. So मैं इस बारे में भी बात करना चाहूँगा कि what kind of work do you do and what's your daily routine, because so many people complain that they have a sedentary job, they're sitting all day long, और ये उनको मौका मिलता है complain करने का कि यार हम कुछ नहीं कर सकते. So tell me about your lifestyle, your background. Where do you wake up? किस तरह का काम करते हो? किस तरह के mental pressures हैं? और emotion level पर उनको कैसे संभालते हो? All right. So I'm an MBA. I've been into creative domain for last 5-6 years. Before that, I was into corporate planning, and I've been throughout my career into mostly into the management jobs. Or assisting management. My first job was Luminous and then McAfee, and then throughout. Then I founded, along with 2 of my friends, Fabric Lure. It's a band that is into fabrics. So that's a very brief thing about me. My job, it's entirely about creativity, and you'll be surprised that I started my career as a sales professional. Okay. Then I started doing patent research, intellectual property right research, like the IP of electric batteries and stuff like that. Then I got into corporate planning and then completely digressed into creative domain. So I have navigated from like A to Z in last 12 years. So coming back to your current scenario, if I would like to talk to you about your last year, अगर हम पिछले साल से आपकी जर्नी के बारे में बात करें तो कैसी जीवन शैली रहती है? आप रात को कितनी बजे सोते हो? क्योंकि मेरा ये मानना है कि सुबह क्या होने वाला अगले दिन, मंडे को कैसा जाने वाला है वो संडे डिसाइड करता है. तो 4 बजे के बाद आप जो कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है. तो of course because it's a creative work that you are into, so this implies a lot of thinking. Yes. तो नींद आ पाती है आपको या विचार चलते रहते हैं? नहीं आ पाती है. In fact, I have taken many conscious steps to really have very good sleep. Like it does not just come like that. क्या करते हो? So lot of things. I am a big believer of moonlighting. So I do not keep white lights after 8:30 or in the night. That's actually very important. So I don't do white lights. Then I do watch some series. Like I am a big movie junkie. Like I watch a lot of movies. Right? So I do watch movies, no question about it. But I dunk completely 10:30 बजे for sure. Like इसके beyond capacity में नहीं, मैं करना चाहिए पापे से ज़्यादा. But क्या आपकी movies वगैरह जो भी binge watching करते हो, do you do it every day or you have? No, not at all. Absolutely not. I mean, I don't do this any series or movie on weekdays. कभी-कभी हो गया तो अलग बात है, but weekdays पे तो I don't do much, right? But on weekends I definitely spend my time in watching good stuff, good content, and reading. So creative domain के अंदर me time is super critical. Like अगर आप खाली नहीं हो ना बहुत थोड़ा, if you are not able to keep your mind away, तो you don't really get very ingenious ideas. या आप कर नहीं पाते हो. तो आपके कहने का मतलब है कि आप एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीते हो. आमतौर पे पूरे वीक के अंदर काम करके आते हो, रात को एक सिंपल खाना खाते हो, है ना, फैमिली के साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करते हो और फिर एक टाइमली ऑर्डर पे सो जाते हो और वाइट लाइट से रिफ्रेन करते हो.
Yes. ये व्हाइट लाइट वही है जो हमारे सेल फोन्स में होती है, हाँ, जो कंप्यूटर स्क्रीन्स में होती basically, है, yeah, absolutely. जो आंखों को आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है। Even our normal regular house में ट्यूब लाइट्स हैं, CFNs हैं, they are super bad. इसलिए पुराने जमाने में कैंडल लाइट यूज हाँ, करते थे, candle which was actually very Yes. very good. तो आप ये रिकमेंड करोगे कि रात Highly. को लाइट को डिम रहना चाहिए और कैंडल लाइट ज्यादा यूज Absolutely. Well, I mean, you will see even a single. See, for me, weekends are precious. And I go to a good restaurant and research about it. And मुझको खाने का अलग-अलग वैरायटी खाने का बहुत शौक है, एक्सप्लोर करने का. But there has to be some detail in it. ऐसे नहीं है जो स्ट्रीट फूड जाके मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप पूरा सप्ताह मेहनत करते हो और एक बैलेंस मील खाने की कोशिश करते हो, हाँ, हाँ. तो वीकेंड पर आप थोड़ी मस्ती करना चाहते हो, you want to Absolutely. explore your ideas, Yeah, yeah. तो वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। Yes, yes. तो हेल्थ और फिटनेस के लिए आपने अपने आप को पूरी तरीके से बदला नहीं है, बल्कि एक सांचे में अपने आप को ढाला है। हाँ, it is all about scheduling. Scheduling. हाँ, it's all about scheduling. ऐसा नहीं कि that I don't eat pastries. I absolutely love them, right? But and I absolutely love pizzas. I big fan of pizzas, right? But only wood fired now, right? But it's all about scheduling. मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे को ऑफिस में other people are partying and कि सर ये पिज्जा खा लो, तो I won't eat that. मतलब आप एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हो। When I'm at workplace, I manage my work Yes, and I yes. eat accordingly. हाँ. When it's a weekend, I party I and I absolutely drink. do. That's all right. So एक इमोशनल बैलेंस बना के रखा है और आपने अपने व्यक्तित्व को पूरा चेंज नहीं करा है। So there is still, that college skill left in you. I would say 5%, and that's keeping you young. Is that true? More than that. So even in college, I was like this only. Okay. I Always had balance. I always had a balance. Of course, my notions of health were a little different, ठीक है. flawed. और सबकी एक एवोल्यूशन होती है। आई थिंक सबको सब कुछ पता नहीं होता है कॉलेज के टाइम पे। बट यस, आई ऑलवेज ट्राई टू हैव सर्टेन डिफरेंट पाथ, लाइक मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर करता था। जैसे आई यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ म्यूसली इन कॉलेज। Okay. Whereas other people, other of my mates, मेरा जो बैचमेट था, रूममेट था, साउथ इंडियन था, वो कुछ भी मिलता था, वो मैगी सब कुछ खाता था। So I was not like very averse to that, but लेकिन I later realized that muesli is not as good as people think it is if it is consumed in a way that they are doing or it is being promoted. तो ऐसे बहुत सारे emotions थे। जैसे पहले I was big time into juices and it actually ruined my gut system because I had no clue कि यार juices को खाली पेट नहीं पीना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन बहुत एंड जब कोई डाइटिशियन के पास जाता है एंड दे कम अप कि मेरे को उसने डाइटिशियन ने बोला है कि जूस पीना है, हाँ. पीपल आर having all kinds of wrong combination fruits. Oh, absolutely. And they are having juices जो टेट्रा पैक में पैक मिलते हैं. They don't know what's going in there, what's mentioned on that bottle, and sometimes they just open it and then use it for like 3, 4, 7 days. Yes. जबकि उसकी समय सीमा सिर्फ 24 घंटे होती है या उससे भी कम। Yeah. एक Once बार it is उसकी opened, खोल yeah, it के has to be consumed. Yeah. But आजकल ये बड़ा फैट चल रहा है, डिटॉक्स बाय जूस का है। So it's not for everybody. People have to understand कि बायोडाइवर्सिटी होती है और सबकी सिचुएशन अलग है। हाँ. So they cannot just copy anything that they are watching on YouTube. They have to Yeah. use their own common sense also. So tell me about the aspect कि जब आप इतने तरीके से जीते थे, तो घर पे माहौल कैसा होता है? Because you are a very normal person जो सुबह ऑफिस जाता है, शाम को घर आता है, घर में परिवार है, सारे सदस्य हैं, तो वो लोग तो हलवा पूड़ी खाते हैं या छोले भटूरे खाते हैं। How did you manage that जब आप एक छोटे बच्चे थे या जब आप 20s में थे, जब आप अभी 30s में हो? How do you manage that? I mean, आप उनको कैसे समझाते हो या एक टसल क्रिएट नहीं होता घर में कि यार तुमको जो खाना है खाओ, मैं इसमें खुश हूँ, आप लोग मेरे को फोर्स मत करो, बिकॉज ये एक ऐसा इशू है दैट एवरीबॉडी इज फेसिंग these days. Even a certain person wants to build their body, wants to feel emotionally well, they are unable to because they're eating all this junk food unknowingly. Yeah. With wrong packaging, wrong information. So what do you suggest about people who are into normal lifestyle, एक normal housewife है, एक normal father है, जो उसको डायबिटीज हो चुकी है, जिसको थायराइड हो गया, जिसका फैटी लीवर है,
और वो सुधरना चाहता है, Yeah. लेकिन घर का कल्चर ऐसा है कि अगर उसकी माँ उसके साथ रहती है तो बोलती नहीं तू तो रोटी खा के ही सोएगा, यू नो दैट ऑल इमोशनल ड्रामा. Yes. सो हाउ डिड यू एक्सप्लेन दिस टू योर एल्डरली पेरेंट्स हु कम फ्रॉम अ जनरेशन वेयर दे थिंक कि ज्यादा खाना तंदुरुस्त होता है और वो ये चीज को भूल गए हैं कि उस जमाने में लेबर कितना होता था, आप कितनी कसरत करते थे, बात बात पे चलते थे. तो ये परिवर्तन आप कैसे समझाते हैं उनको, ये आप जरूर बता, बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स टू नो हाउ डू यू मैनेज विद योर फैमिली. तो नो डाउट डिफिकल्ट था, बिकॉज क्या होता है कि व्हेन आप जब सडनली नई चीज सीखते हो तो यू काइंड ऑफ लाइक ट्राई टू फोर्स इट ऑन पीपल इन लाइक दिस इज एब्सोल्युटली द ब्लैक बॉक्स ऑफ स्टफ, इट इज ट्रुथ लाइक, और यही करना है. तो ऐसा होता था, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता था. बट देन ओवर ईयर्स इन जनरल सब कुछ एक जर्नी है, अचानक से कुछ भी नहीं होता है. So over years, what I realized that what I had to do, the core part was not to really absolutely change कि वो जो खा रहे हैं वो पूरा change. बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करें, but we make small and It's all about the ingredients. okay. All about the ingredients because ऐसा नहीं है कि 50 साल पहले लोग हलवा भी नहीं खाते हैं. Right. लोग भी खाते थे, लेकिन वो हलवा बनावा किसका होता था, ये इम्पोर्टेंट है कि वो चीनी का होता था या गुड़ की चाशनी है या मिश्री की चाशनी है. तो मैंने सिर्फ ये किया मम्मी को और पापा को कि यार ऑल यू नीड टू डू इज कि खाने का है, कोई दिक्कत नहीं है, हलवा खाएंगे, हलवा बनेगा घर में, लेकिन बनाएंगे मिश्री का. ओके. तो हाँ, बस So, यही एक तरीके से आप वापस ऑर्गेनिक्स पर आ गए, Absolutely, जो बिल्कुल हाँ. बुनियादी चीजें थी आपने उससे बनाया, ना कि रिफाइंड शुगर से बनाया. हाँ बिल्कुल. इट्स वेरी इजी, Very यू नो easy. कि आप अभी भी हलवा खाओ, I do. मॉडरेशन में खाओ, हाँ. लेकिन अब वो बुनियादी चीजें लेकर आओ. तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, Yes, या yes, फिर yes, yes. रिटर्निंग बैक टू द रूट्स. Absolutely. That's a wonderful point. ये कितना इजी है अपने घर वालों को समझाना. हाँ, बहुत और easy फिर है. इसी बीच में आप उनको धीरे धीरे समझा सकते हो कि यार चलो अपन पहले रोज खाते थे, अब है ना अपन हफ्ते में 3 बार खाएंगे. बस. फिर अपन कहेंगे कि देखो संडे को है ना तो अपन कोई व्यायाम करेंगे ना कुछ करेंगे, सुबह से आप अपना रेडियो सुनो, पुराने गाने सुनो, मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊंगा, आई विल कुक एवरीथिंग दैट यू वांट टू ईट, आई विल कॉल यू गाइस, नो प्रॉब्लम. सो यू मेंटेन दैट हैप्पी एटमॉस्फेयर इन द हाउस एंड दोनों जन खुश होते हैं क्योंकि आप लोग भी वो खाते हो जो आपको खाना है इन मॉडरेशन, एंड सबकी बीमारियां भी मेंटेन रहती है, बीमार होते नहीं है अगर आप शुद्ध खाओगे. And of course, you got to move and do any form of exercise. Yes. So coming to the point of exercise, what form of exercise do you prefer in your 30s compared to your 20s? So again, And I'm talking this for everybody. A normal working person जो बॉम्बे में भी रहता है, सुबह 8 बजे निकलता है और लॉन्ग लोकल ट्रेन जर्नी करता है, धक्के खा के वापस आता है, लेकिन वो भी कुछ मेंटेन कर सके. अगर स्वास्थ्य नहीं है तो I mean, you know what, I'll share this with you कि मेरे को ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलता है जिसको मैं कहता हूँ कि आप 55 साल की उम्र में क्या अपने ग्रैंड सन्स के साथ या ग्रैंड डॉटर्स के साथ मस्ती करके कैच खेलना चाहते हो या रेलगाड़ी बनना चाहते हो, या आप कुर्सी पे बैठ के उनको बोलोगे अरे यार वो उठा के लिया. Nobody would refuse to that. Yeah. So how would you reach there? You got to take care of yourself with small little things every day, regardless your age, regardless your responsibilities. वरना जो आप इतना धन संचय कर रहे हो, जो कि मेहनत कर रहे हो, मतलब कि क्या अगर आप बेड पे रेस्ट कर रहे हो और वो बच्चे कर रहे हैं, there's no use. I mean, तो आप मेरे को बताओ कि कैसे बिजी पर्सन अपनी लाइफ में इस चीज को बहुत इजीली मैनेज कर सकता है. So exercise की अगर बात करें तो again is the same what I had about food, the same notions I had about exercise, right? So I as I told you I was 85. 85 kg. And so जब उस वक्त And that was because of wrong eating patterns and eating any random thing that you हाँ, I can say that. So क्या हुआ था, एक बार I went to a physician, Ayurvedic physician. I'm big time into Ayurveda, but it's a little contrary experience of Ayurveda than so people के लिए थोड़ा सा I think it will be a good source of information that you need to understand Ayurveda from holistic point of view, not take just गए Ayurvedic physician के पास और so I went to an Ayurvedic physician कि मैंने उनको बोला कि यार मेरे साथ मेरे को हेडेक होता है, गैस होती है, क्या करें. तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा आप अगर ये लो सब बना के एक कंकॉशन आपको. हाँ, एक कंकॉशन दे दिया एंड उसके अंदर देयर वाज समथिंग कॉल्ड क्रव्याद रस. Okay. राइट.
So I had absolutely no idea कि सब क्या होता है, काम दोबारा center of the others and lots of stuff. So for 1.5 years उससे मेरे को इतनी भूख लगती that I am just eating throughout the day, eating and I am never content. I'm just eating. You never satisfied. You never had the feeling of मतलब being मैंने full. इतना खाया है कि like 8:30, 11 o'clock, 1 o'clock, और 3:30. इस टाइम आपकी एज क्या थी? I was 25, 26. Okay. When I just got into job, I was. And were you also physically very active? I was, but लेकिन I had huge sufferings like headache every third day headache. When I say very physical, I mean were you in the gym or swimming or any नहीं long runs? हाँ running I used to do and exercise. I used to do push-ups and. तो जब आपने ये जर्नी को लेना स्टार्ट करा तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी and you were eating any random thing. हाँ and random हो गया सब कुछ. तो so lesson that I learned is कि ये ना there is just not one single key to this So way. you need proper knowledge before you introduce हाँ, any new verb to your yes. systems. तो एक्सरसाइज में भी ऐसे ही था. पहले आई यूज्ड टू डू heavy exercise. I mean I used to do 200 push-ups. Right. That was my thing. But फिर धीरे करके I realized कि जब मैं इतना करता था तो मुझे नींद भी बहुत आती थी ऑफिस में. तो मैं इतना एक्टिव नहीं रह पाता था. ठीक है, मैं मेरे को बहुत छूट आते थे ऑफिस फिर में. बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा exercise खाना खाया, हाँ. और फिर बॉडी को वो उसको पचाने rest के नहीं लिए मिल रहा है. हाँ, नहीं right. चाहिए, right. So you not able to focus well on your Absolutely. So then gradually I made my exercising routine more holistic. मतलब ऐसा नहीं है that I only do yoga, या I only do running, या I only do push-ups. So my 1.5 hours of routine is still mix of everything. I do running as well, I do push-ups as well, I do Surya Namaskar as well, and I do yoga as well, and I do a bit of pranayama as well. But everything small thing. So ये क्या ऐसा है कि आज मेरा ये करने का मन है तो मैं ये कर लेता हूँ, ये करने का मन है तो मैं ये कर लेता हूँ, मतलब there is no restriction on your workout pattern which gives you an ease on your mind कि देख मेरे को 20 मिनट कुछ ना कुछ तो करना है. अब जो मेरा मन है मैं वो करता हूँ. You don't follow a Hollywood or Bollywood style pattern की नहीं इतने मेरे को push-ups करने हैं, इतने मुझे ये करने हैं, वो करना है, because end of the day we are not those actors. Yeah. And nobody's clapping for us and nobody's giving a 4 crore rupee check to us. Yeah. So आपके कहने का मतलब ये है कि आप वो एक्सरसाइज करो जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन बस इतना सा महत्व बना लो कि रोज हमें 20 मिनट 40 मिनट 1 घंटा इतना समय देना है. कुछ करना है. बट हाँ उसमें एक चीज दैट आई हैव लर्न ऑफ कोर्स अ वेरी एंशिएंट साइंस बिहाइंड इट. एक्सरसाइज तो करनी है, उसमें वैरायटी चेंज होता रहता है. बट वन सुपर जैसे हम सुपर फूड बोलते हैं वैसे एक सुपर हैबिट है दैट इज मसाजिंग. Okay. Oil massage. So मैं एक just a small incident. So when I was in first year, second year, तो जैसे सारे लड़के there was a brill cream at that time. Brill cream. I don't know whether we call it or not. एक पहले आती थी brill cream आती थी. It was so heavily advertised, so much heavily advertised that everybody was just styling their hair with brill cream. And आज भी मैं देखता हूँ कि आई थिंक किड्स वगैरह या टीनेजर्स डोंट डू मच ऑयलिंग, इवन इफ दे डू लाइक जस्ट हेयर ऑयल, लाइक नॉट द फुल बॉडी ऑयलिंग, एंड दैट इज की नो मैटर व्हाट. सो इवन इफ लेट्स से किसी दिन अगर मेरे को एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेट्स से कि संडे है जैसे, तो बॉडी को ल्यूब्रिकेट करना इज क्रिटिकली इम्पोर्टेंट. This also helps in circulation of the blood. Oh, absolutely. So lubrication, internal and external lubrication is very important. अगर आपकी किसी दिन लेट्स से कि यार आप रात को लेट हो गए काम करते करते, सुबह थोड़ा लेट हो गए, चलो एक्सरसाइज मिस हो रही है, लेकिन जिस दिन मिस हो रही ना उस दिन भी बॉडी ऑयलिंग तो आई डू इट विदाउट फेल, नॉट इवन अ सिंगल डे. इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग लाइक इवन फॉर एन एक्सपीडिशन, लाइक इवन व्हेन आई वेंट टू लेट, that's basic. Even if the exercise नहीं हो रही है. So मतलब आप कुछ आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो. हाँ. Again we come to this part कि lifestyle में एक नया create करना है, rather than कि कोई मेरे पास आता है और मेरे से पूछते हैं कि Gaurav what diet should I have? Now
you don't really need to ask me for a diet, because diets are meant for either ill people or for athletes or for a Hollywood star or Bollywood star. You are none of them. So you got to use your own brain and eat what is not suiting to your body or what is suiting to your body. आपके अगर पेट में दर्द हो रहा है तो आपको एग्जैक्टली मालूम है यार मैं समोसा खाता हूँ मुझे एसिडिटी होती है, then don't eat a samosa. I mean you don't need a doctor to tell you that. You're not feeling fresh in the morning, either you are consuming less water or you're eating late at night or you're not sleeping enough. You don't need a doctor at age 35 or 32 to tell you that. Today that's like basic knowledge. You can ask your grandmother or grandfather, right? तो लोग जाते हैं. तो आपके जीवन में क्या रहा? आपने अपनी डाइट खुद क्रिएट करी या आप भी किसी डाइटिशियन के पास गए और उसने कुछ आपको लिख के दिया, और डिड यू सेल्फ लर्न फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बुक? व्हाट डू यू सजेस्ट पीपल? सो हाँ, इसमें भी ऐसे ही जैसे मेरा कुछ एक्सपीरियंसेस विद आयुर्वेदिक फिजिशियन ऑफ इधर राजस्थान में भी, दिल्ली में भी मैं व्हेन आई वाज देयर आई वेंट टू कपल ऑफ टाइम एंड द वर्स्ट पार्ट अगेन it's a problem not with Ayurveda, it's a problem with the Ayurvedic physician. कि वही प्रॉब्लम जो मॉडर्न मेडिसिन वाले करते हैं कि वो जस्ट आपको एक पिल के फॉर्म में देते हैं चीज कि अरे यार ये ले लो सही हो जाएगा, बट दैट इट्स नॉट हाउ इट इज. आपने उस बंदे का बॉडी टाइप समझा ही नहीं कि यार तुम्हारा बॉडी टाइप क्या है एंड तुमको करना क्या है, लाइक खाना है बॉडी टाइप है. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पहले कफिंग कोल्ड बहुत होता, कफिंग एंड कोल्ड नॉट उसी वक्त जब मैं 85 का था एंड उस वक्त बॉडी वाज नॉट फंक्शनिंग वेल. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था जो एक जनरल होता है ना कि माय बॉडी इज कफ प्रथाल इन टिपिकल आयुर्वेदिक, तो ह्यूज मिसकॉन्सेप्शन, ह्यूज. तो मुझे 8 इयर्स लग गए ये समझने में कि एक्चुअली मेरा बॉडी टाइप क्या है. 8 इयर्स इट टुक. बहुत से लोगों को है, देयर इज अ ह्यूज परसेंटेज इन इंडिया जिनको ग्लूटीन एलर्जी है. और उन्हें ये मालूम ही नहीं है ग्लूटीन एलर्जी, और उनका जिंदगी भर पेट फूला हुआ रहता है और एसिडिटी रहती है और बर्पिंग रहती है और हेडेक्स रहते हैं. ये अधिकांश लोगों के साथ है क्योंकि हमारे जो पेस्टिसाइड्स यूज करे जाते हैं और जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं सॉइल को ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है. तो डॉक्टर्स की बात आप कर रहे थे. यस, यू नो टुडे द कल्चर ऑफ द डॉक्टर्स इट्स रियली वेरी कॉम्पिटिटिव. सो टुडे एवरीथिंग इज अबाउट मनी. So when my patients come to me, I always tell them this: there is no money in being healthy. There is only money in the dead. Or sorry. Let me reframe that. There is no money in the healthy or the dead. There is money only being ill. So the doctors actually, because they have so much pressure about selling certain amount of medicines or occupying the rooms in their hospital, they are under this pressure to not cure you well enough, which is totally against the organic teachings in the Ayurveda what Indian culture had for so many centuries. So मैं अक्सर जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको थायराइड का इशू होता है या ब्लड रिलेटेड इशू होता है या स्किन डिजीज होती है. Even I had attended this one patient who was under second or maybe third stage of cancer. Wow. And डॉक्टर्स ने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि आप कितने घंटे सोते हैं, आप कितना पानी पीते हैं, what is your lifestyle, how many hours you work, what is your emotional condition, what kind of stresses you have. वो सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं because there is lack of time. So here I'm not against doctors, but the scenario is such that they are under pressure, and being a doctor is just like being another corporate job, which is sad, but that's the truth. So people have to use their own common sense to understand the problems. और उन्हें एग्जैक्टली पता चल जाता है यार मैं आइसक्रीम खाता हूँ तो मेरे को अनईजी फील होता है अगर मैं रात को 9 बजे बाद खा रहा हूँ. ठीक है, as simple as that. You don't need a physician or go to a reputed hospital and take an appointment with a doctor to understand that. I love ice cream, by the way. That's all right, but if you maintain some moderation, that's all right. Yes. So coming back to this, तो आप अपने मन को काबू में रखने के लिए लोगों को क्या टिप दे सकते हो कि मेरा भी मन भटकता है, मेरा भी मन करता है कि आज मैं कुछ वर्कआउट नहीं करूं, कुछ जो भी मन में आए वो खाऊं, या फिर मैं ऑर्डर कर दूं कुछ जंक ऑयली एंड बड़े भयंकर मसाले वाला. बट देन हाउ डू यू कीप योर इमोशंस इन चेक? बिकॉज ये हर किसी के साथ होता है कि घर में कोई स्ट्रेस है, घर में बच्चा कहना नहीं मान रहा, या देयर इज एन आर्गुमेंट विद पेरेंट, व्हाटएवर, और विद वाइफ, और कि ऑफिस में कोई काम नहीं हो रहा है, and the first thing people do is order a cup of coffee, or if you're a smoker you just go out and take a smoke.
यू नो। और जो ये दोनों नहीं करते हैं, जिस कैटेगरी में मेरा एक फ्रेंड भी आता है, वो सीधा सा कुछ भी बाहर जाके खाता है, इट कुड बी रैंडमली एनीथिंग, इट कुड बी सैंडविच और पेप्सी और कोला और एनीथिंग, यू नो। सो हाउ डू यू मैनेज दैट काइंड ऑफ इमोशनल स्ट्रेस कि जब कोई लाइफ में पंगा हो गया है या कोई डेली यू नो रूटीन में पंगा हो गया है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? Okay, so मेरे साथ भी Do ये you प्रॉब्लम। meditate or do you chant any mantras? I do meditate, but very briefly, like 5 minutes only. हाँ, not more than that. जैसे हमारी फैमिली में संध्या का ट्रेडिशन है। संध्या इज अ काइंड ऑफ 10 minutes सीक्वेंस ऑफ मंत्रास, तो पापा वगैरह करते हैं। मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे एक आपका कलीग है या एक मेरा कलीग है, जिसको जरा सा भी स्ट्रेस होता है, जिसको लगता है कि 15 ईमेल्स आ गए, मुझे तुरंत जवाब देना है, तो उसको चाय चाहिए। राइट। What is your management skill? How do you manage that kind of stress without the help of any outside substance? It could be nicotine, it could be caffeine, it could be sugar, it could be anything. Because पहली अर्ज होती है इंसान की कुछ मीठा है नमकीन खाने की या निकोटीन की, could be coffee or smoke. तो उसके लिए इकोसिस्टम बनाने का है। अच्छा, आपके अराउंड Please इकोसिस्टम। elaborate that. तो मैंने भी ऐसे ही करा था कि पहले मुझे अगेन एज आई सेड बेकरी एंड कुकीज एंड ये सब मुझे बहुत पसंद है इन जनरल, बट सो इफ आई गेट अ कुकी, ये जो मार्केट में मिलते हैं, तो या तो मैं ये लेके आऊँ, तो जब मैं ये लेके आता तो फिर मैंने बस वही धीरे धीरे करके एनालाइज किया कि यार विद दिस कुकी आई एम एक्चुअली कंज्यूमिंग दिस, ये अंदर जा रहा है। तो धीरे धीरे करके जो एक्सेसिबल इकोसिस्टम है ना, जैसे कि ये मेरा घर है एंड किचन है, अब आप किचन में अगर कुकीज रखोगे तो वही खाने में आएगा। Exactly. ठीक है, अगर आप किचन में चाय रखोगे तो वही पीने में आएगी। बिल्कुल। तो नाउ एज आई सेड इट्स ऑल अबाउट इंग्रेडिएंट्स, इट्स ऑल अबाउट दिस। तो मैंने अपना इकोसिस्टम ही ग्रेजुअली चेंज कर दिया, फ्लिप कर दिया कंप्लीटली। मैं अब घर में बनी हुई कोई जैसे चीजें होती हैं, ठीक है, उनको मैं पहले से स्टॉक करवा के रखता हूँ। हाँ, यार थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट। मेहनत की बात है, it's about habit. हाँ, it's Once you about- get into that routine, then you- हाँ, बट वो एक जो फर्स्ट टाइमर्स के लिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैं हमेशा इनफैक्ट ऑफिस के अंदर भी व्हेन पीपल टॉक कि यार इतना सब कुछ कैसे करेंगे, मैंने कहा इतना सब कुछ नहीं करने का है। अभी तो ना आप जस्ट स्टार्ट विथ लेट्स हैव गुलकंद थ्रू आउट दिस समर, बस इतना ही बोल देता हूँ मैं कि यार जस्ट चेंज वन thing, one habit. हाँ, one habit, To just make a start, small difference. so that you feel things are approachable. ऐसा नहीं कि अरे यार this guy is like वो पता नहीं कहाँ Just पे take है। the first step. हाँ, just take a first step. That's it. So I also do this. धीरे-धीरे करके in my kitchen, what I changed is what I can consume. तो जो मेरे पास accessible है, approachable है। So ये kitchen हम आपके ऑफिस किचन की बात कर रहे हैं। नहीं, not office kitchen, घर पे। ऑफिस में तो मैंने अब जैसे typically people have tea and coffee, तो I normally keep a lot of sachets of green tea, ठीक है? So people want to know green tea के नाम पे थोड़ी सी ना वही जो ginger और इसकी जो teas है, तुलसी टी है, they don't taste that great, but there are variety of teas that taste great as Taste great too. right? तो मैंने I kept a lot of pouches, so I मैं distribute करता रहता हूँ लोगों को। Yeah, let's try this, hibiscus tea, let's try तो this. धीरे-धीरे वो दूध की चाय की धीरे-धीरे आदत हट रही है, नए फ्लेवर्स आ रहे हैं, and people are slowly eliminating milk from tea, because this is now a known fact कि जैसे आपने दूध में चाय की पत्ती मिलाई वो acidic हो जाता है. Oh, absolutely. And that's actually a destruction for your gut health. Absolutely. So that's बस very धीरे-धीरे important. I changed what मतलब is आपको accessible. conscious decision लेना है कि मुझे जीवन में परिवर्तन चाहिए, अपने लिए, अपने ऑफिस के साथियों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, and there you make the difference. So whenever I come across young mothers of age like from 28 say up to 32 and 34 जिनके अभी अभी बच्चे हुए हैं 3-4 साल के हैं, and they suddenly have this problem of thyroid. क्योंकि मैं नोटिस करता हूँ थायराइड के कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रेस से हैं, और स्ट्रेस हो जाता है, नया बच्चा आता है, एंड मोस्ट ऑफ दीज फीमेल्स अराउंड हियर आर नॉट लिविंग इन देयर होम सिटी, सो द पेरेंट्स आर मिसिंग, तो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, एंड दे डोंट नो हाउ टू मैनेज, तो एक आर्टिफिशियल स्ट्रेस आ जाता है उनके ऊपर, एंड दैट्स नॉट रेगुलेटिंग वेल. सो सिर्फ इतना ही कि अगर वो थोड़ा सा अपने खाने में परिवर्तन कर दे, कहीं पर भी अपनी नींद को थोड़ा सा स्क्वीज करके एडिशनल नींद ले ले, तो वो सब मैनेज हो जाता है.
Yeah. और थायराइड का बहुत ज़्यादा इशू है जंक फूड से। अगर आपने जंक फूड एलिमिनेट कर दिया तो अपने आप बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होने लग जाते हैं और चीज़ अपने आप नॉर्मल पर आ जाती है। सो यू डोंट एक्चुअली नीड टू pill to control your hormone. All you need to do is to check on your food intake. वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. Right? And this goes with all other the lifestyle disorders like diabetes, hypertension, blood pressure issues, and prostate complications also. So yeah. So other than this, आपके और क्या challenges रहे हैं जिनको हमने बहुत easily handle कर लिया? हमने ये बात करी है कि हम कुछ भी workout करो हल्का फुल्का, just keep your body active. ठीक है, छोटे छोटे चेंजेस करो कि मीठा अगर पसंद है तो उसकी जगह आप गुलकंद ऐड कर लो, शुगर की जगह आप देसी खांड अपने खाने में यूज करो, या अगर चाय ले रहे हैं तो चाय में से धीरे धीरे दूध की मात्रा कम करो और वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। एंड इमोशनल मैनेजमेंट के लिए घर के अंदर और ऑफिस के अंदर ऐसी चीजें रखो जो कि हेल्थ से रिलेटेड हो, ताकि जंक फूड हो या आपकी हेल्थ को खराब करे। My take on this is just again an experience that I had. Ki people think that maintaining like healthy stuff and healthy lifestyle is not enjoyable. ऐसा लगता है लोगों को। ऐसा मिसकंसेप्शन है क्योंकि एडवर्टाइज में इसको दिखा दिया गया है एडवर्टाइजिंग करके कि अगर कोई बच्चा कोई फूड खा रहा है तो पीछे से कोई बच्चा आता है, he would just make fun of him. Okay, I'm having a pizza and you are just having an apple. Your life is boring. And that's actually wrong, and that's advertising gimmick. That's destroyed the youth. But now people are understanding, especially after COVID, that how important immunity and health is. Yes. Right? So they are getting back to the roots. Yeah. And here we at Jivik Dogri actually helping people to make them understand कि आपको कोई dieting नहीं करनी है, आपको सिर्फ clean भोजन खाना है. Ingredients. Change the ingredients. ऐसा नहीं है कि आपको उबला हुआ खाना खाना है या आपको भूखे रहना है. आपको सिर्फ स्वच्छ खाना खाना है जो सही सोर्सेज से लाया गया है, जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स नहीं है. That's all you need. उससे शरीर में कामनेस रहती, इमोशनल बैलेंस रहता है, यू परफॉर्म बेटर इन लाइफ. आई मीन मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ एंड आई एम श्योर यू कुड रिलेट टू दिस कि जब आप गंदा खाना खाते हो या मिसमैनेजमेंट करते हो लाइफ में, तो ऐसा नहीं होता कि आप अगले दिन बेटर इसमें चले जाते हो. टेक्स व्हाइल, एक बल्ब की जैसे होता है, धीरे धीरे डिम होता है, आपको परफॉर्मेंस कम होने लग जाता है, यू डोंट इवन रियलाइज कि यार मैं पहले से ज्यादा आलसी हो गया. एंड यू डोंट डू वेल विद योर फैमिली एंड रिलेशनशिप्स. हर जगह मैटर करता है, इसलिए शायद कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया. Yeah. So let's conclude this wonderful conversation with you. Absolutely. And जो लोग भी मुझसे पूछेंगे to contact you about the tips that you are giving out, share your contact details with them. I hope you could be an inspiration to millions watching this video. No, because you have made it so easy for most of the men and women. कि यार चीजें बहुत easy है मैनेज करना और आप अपना काम भी करो. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको गिमिक्स करने पड़ेंगे, आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको जुम्बा जाना है, कुछ भी नहीं. इट्स लाइक वेरी इजी. जस्ट डू व्हाटएवर यू कैन डू, मेक लिटिल डिफरेंसेस एवरी डे, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे जो आप कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी द एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर चिल्ड्रन. जो आप कर रहे हो वही बच्चे करने वाले हैं. सो डोंट गो टू अ डायटिशियन और अ डॉक्टर कि यार इसकी ये बीमारी है, वो बीमारी है, तो डॉक्टर बोलेगा ये मत खिलाओ और ये खिलाओ. एग्जैक्टली वही आपको करना है. बच्चे वही करेंगे जो आप कर रहे हो. So let's conclude this conversation. It was such a wonderful experience to know your views, and you really made it so easy for me and for others listening to this podcast. Yes. All right? I really enjoyed it. Okay. And I'll wait for your other episodes. Yeah, sure. We'll like to have you back soon. Right. Okay, cool. All right. Bye.